हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 7 सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस वीडियो में आप ये पूरे चैप्टर को आसानी से सिंपल तरीके से सीख सकेंगे, याद कर सकेंगे और करेंगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स को हम कवर। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आज इसमें क्या कवर कर रहे हैं। वी विल कवर कि मिडिवल पीरियड क्या होता है, the maps and the cartography, how the use of language depends time to time, then the textual record and manuscripts, then the castes and जातिस क्या होती हैं, कैसे रही, कैसे फॉर्म होती हैं, और बाद में पढ़ेंगे रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में जो कि टाइम टू टाइम डेवलप हुए। सबसे पहले मिडिवल पीरियड आखिरकार किस पीरियड को कहते हैं? The period from the second half of the 8th century up to the first half of the 18th century is the medieval period of the Indian history. किस पीरियड को कहा? The period from the second half of 8th century to the first half of the 18th century. Okay. Then the maps and cartography. मैप्स क्या है? मैप्स तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, है ना। तो मैप क्या है? मैप आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल चेंजेस। वो सोर्स है जिसके थ्रू हम चेंजेस को जो हिस्ट्री में हो चुके हैं या हो रहे हैं उन चेंजेस को हम ट्रेस करते हैं। एंड द साइंस ऑफ रीडिंग मैप इज द कार्टोग्राफी एंड द स्किल आर्टिस्ट आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। मैप्स को रीड करने की जो साइंस है उसको कहते वो है कार्टोग्राफी, और वो जो स्किल्ड आर्टिस्ट हैं जो कि मैप रीड करते हैं, द पीपल हु रीड मैप्स आर द कार्टोग्राफर। नाउ यू नो कि मैप्स क्या है। तो इट इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द कंटेक्स्ट वेरी थ्रू टाइम टू टाइम। हमेशा टाइम टू टाइम मैप्स इसलिए बदलते रहते हैं। जैसे मैप्स बदलते रहते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे लैंग्वेज का भी यूज़ धीरे धीरे चेंज होता जाता है। उसके मीनिंग्स डेवलप करते हैं या फिर अलग अलग हो जाते हैं। मतलब देयर आर डिफरेंसेस दैट वर ट्रेस्ड इन द यूज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ओवर टाइम। एग्जाम्पल, द टर्म हिंदुस्तान was used earlier but it is now India. The term Hindustan was first used by Minhaj-e-Siraj in Persian conqueror in 13th century. 13th century में सबसे पहली बार ये वर्ड हिंदुस्तान यूज किया था। किसने किया था? मिनहाज सिराज ने, एक पर्शियन कॉन्करर थे। Then the term Hindustan was then continued. Why ही किस चीज को इसने हिंदुस्तान कहा था? The area of Punjab, Haryana and land between the Ganga and Yamuna. The term was used in a political sense for lands forming the part of the dominions of the Delhi Sultan. South India was not included in this map. उसमें हिंदुस्तान में South India was not included by them in the 13th century, just till the mid of India. Okay. Then Babur in the early 16th century used term Hindustan in order to describe the geography, the fauna and the culture of this continent. इस सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ का फौना, यहाँ पे जैसा कल्चर है, इसको डिफाइन करने के लिए बाबर ने 16th सेंचुरी में यूज किया टर्म हिंदुस्तान। Then Amir Khusro used the term Hind in the similar sense in 14th century. Then in the 14th century आमिर खुसरो ने क्या यूज किया? हिंद, not Hindustan. With the change of time we observe the idea of geographical and cultural identity. India did exist, but term Hindustan did not carry a political or national meaning. Okay, अब term हिंदुस्तान नहीं यूज होती। अब क्या होता है? अब टाइम we go for India. Then the word foreigner, ये इंडिया का एग्जाम्पल है कि कैसे how the language change from time to time.
Hindustan, then Hindustan was defined for two things. Then there is the Hind and there is the India. So now, उसी तरीके से the word foreigner is used for the sense for one who is not Indian today. आज के ज़माने में हम क्या कहते हैं? इंडियन नहीं है, जो यहाँ का नहीं है, इस कंट्री का नहीं है, हम उनको फॉरेनर्स बोलते हैं. जबकि इन द मिडिवल पीरियड, जिसकी हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, उस समय क्या था? Those who were not the part of the same village were the particular society or that particular culture were the foreigners. मतलब हिंदी और पर्शियन, परदेसी या अजनबी, जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर कल्चर, उस पर्टिकुलर विलेज का पार्ट ना हो, सो दे ऑल द फॉरेनर्स इन द मिडिवल सेंचुरी. ओके, नाउ हमें ये सब कैसे पता है? हमें ये सब डिफरेंट सोर्सेज से पता है. सोर्सेज ऑफ द पास्ट एंड हाउ, व्हाट आर द सोर्सेज? द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स. और सबसे ज़्यादा बात होती है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की. क्यों? क्योंकि देयर वाज द बर्नेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट्स ऑफ द पेपर, सो पीपल यूज्ड टू राइट डाउन द थिंग्स. और हमारे पास उसी वजह से उस पीरियड के लिए देयर वर द far more things that were written, so we have a good textual record on that. During 700 to 1750, 1750, these are the time for our chapter का नाम क्या है? 1000 years. So this 1000 year was studied, okay, from the 700 to 1750, the medieval period, the later half of 8th century to the first half of the 18th century. We traced out the drama entries in the variety of textual records. Basic reason was paper gradually became cheaper and more widely available, जैसा मैंने बताया. So it was extensively used in writing the holy texts, chronicles of rulers, letters, teaching of saints, petitions, judicial records, and for registers of account and taxes. अलग अलग चीज़ों के लिए वो पेपर्स यूज़ होते थे, चाहे होली टेक्स्ट लिखना हो, चाहे रूलर्स की पोएम लिखनी है, उनकी अप्रेजल्स लिखनी है, उनकी जीवनी लिखनी है, या फिर लेटर्स, कोई टीचिंग्स, सेंट कुछ सिखा रहे हो तो वो चीज़ें, पिटिशंस हो या जुडिशियल रिलेटेड थिंग्स हो, हर चीज़ दे वर यूज विद द टेक्स्ट, दे वर द रिटन अप. ओके, देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों? क्योंकि उस समय प्रिंटर्स तो थे नहीं. ऑल थिंग्स वर रिटन मैनुअली बाय हैंड. तो जो भी चीज़ें रिटन मैनुअली बाय हैंड आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये हम लोग जानते हैं. सो दीज आर फ्रॉम कहाँ से हमको मिलती थी इन दैट मिडिवल पीरियड? फ्रॉम द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स. यहाँ से कलेक्ट करके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में संभाल के रखते थे, क्योंकि देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. सो स्क्राइब्स यूज्ड टू कॉपी डाउन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. तो उसकी कॉपीज भी जो बनाई जाती थी वो भी डुप्लीकेट की जाती थी अगेन बाय हैंड, लिख के. इन दैट 1000 पीरियड का टाइम, दैट मिडिवल पीरियड, इट वॉज द फेज ऑफ अ ट्रांजिशन as a lot of development took place. The Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, the firearms in combat were some of the example of the development. यहाँ पे आपने क्या क्या डेवलपमेंट देखे उस मिडिवल पीरियड में? पर्शियन व्हील इंट्रोड्यूस हुआ इरिगेशन प्रोसेस में यानी एग्रीकल्चर में. स्पिनिंग व्हील यूज हुआ वीविंग में यानी क्लॉथ मेकिंग में. Then firearms in combat, मतलब defense and things were also have seen some developments. और developments क्या हुआ? The subcontinent saw new food like potato, corn, chilies, tea and coffee. इसी duration में people came up with new crops like potato, corn, chili, tea and coffee. There were the new technologies and crops came along with the migrants who also brought other ideas with them. And it was a period of economic, political, social and cultural changes and also a great mobility. ये पीरियड में और क्या है? There were, क्योंकि लोग आते थे कहीं बाहर से, so there was a great mobility. Mobility यानी
लोगों का आना जाना, मोबाइल होना, ओके, चलना फिरना। तो इस वजह से देयर वाज अ ग्रेट थिंग्स, पीपल कम इन एंड देन एज दे केम विद डिफरेंट opinion on economical things, political things, social and cultural. So they just change the things in one or other terms. Then the people travel to far off land to make their fortune. Also, इस समय में we can talk about the Rajputs, the prominent community where the group of warriors between the 8th and 14th century. 8th से 14th century के बीच में there were the prior prominent community that were the Rajputs. Who were they? The group of warriors. Okay, they were the Kshatriyas by the caste status. Included in the ruler, chieftains, soldiers and commanders serving in the armies of the different monarchs all over the subcontinent. Maratha, Sikh, Jat, Ahom, Kayasts were the other prominent classes of people. Okay. Now, prominent classes तो पढ़ ली, there were the castes and now the subcastes या जातिस, वो क्या होते थे? There were some adopted tilling the land and became peasants and soon became the part of large complex society. ये अंडर होते थे, ये छोटे, या फिर कहेंगे कि they were less in that community. So they were the peasants, मतलब जो कहीं से आए और यहाँ पे they just got some land and lived there. So they were the peasants and they formed a bigger, larger society. So they were put under tax cover by the rulers like Marathas, Rajput. They just put the tax over their peasants, over the living persons there. So as per their status, जैसे कि वो हो, either if it is a very poor farmer or it's a zamindar. So there were अलग-अलग type के tax cover according to the people's status, according to their jatis. Status according to which they lived gave rise to many jatis या subcastes. Okay. The division of subcastes were made on the basis of their background and occupations. कैसे हुआ और किस बेसिस पे सबकास्ट बनाए गए? Made on the basis of the background, कहाँ से आए हैं या फिर उनका occupation क्या है. So the ranks were available as per the change in the power, influence and resources controlled by members of the jatis. The jati had their own system of ruling. एक तो rulers थे, then jati के अंदर भी there were a system for their own ruling and regulation. They framed rules and regulation in order to manage their own people. An assembly of elders called Jati Panchayat was responsible for enforcing the regulations. और उस समय क्या होती थी? सिर्फ पंचायत नहीं, जाति पंचायत होती थी जो हर एक अपनी अपनी जाति की एक पंचायत थी. Ranks were available as per the change in power, influence and resources controlled by member of the jati. Okay. So you know कि उनकी खुद की एक सिस्टम ऑफ रूलिंग थी, खुद की जाति पंचायत who put the frames of rules and regulations on their people. So they were bound to follow the rules of the village. Village constituted only one small unit of the state and were governed by chieftain. Village किससे governed होता था? Chieftain से. और chieftain village क्या था? Village constituted one small unit of a state. फिर उसके ऊपर state आएगा. Then there will be the entire country. So अब बात करते हैं religious traditions की जो time to time in that 1000 years developed या difference out. So Hinduism saw a great many changes where included the worship of new deities, the construction of temples by royalty and growing dominance of brahmanas and priests. Their knowledge of Sanskrit text, brahmanas earned great respect in the society and new rulers were their patrons. So सबसे पहले there were the construction of temples, there were the need to worship the deities that were sitting in the temples. So by royalty, so there were the
किंग्स के थ्रू किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? ब्राह्मणर्स की, प्रीस्ट्स की, जो ये वर्शिप का काम कर सके, जो उनके लिए गॉड से वर्शिप कर सके. सो देयर वर द नीड फॉर ब्राह्मणर्स. ब्राह्मणर्स भी कि उनको संस्कृत टेक्स्ट आते थे, नॉलेज थी, तो दे अर्न ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. दे बिकम द हायर क्लास. And the most significant development of the period was the rise of the idea of bhakti, which involved the paid and the rise of many new religion in the subcontinent. So उस पीरियड में हम ये भी देखते हैं there was the idea of bhakti बहुत rise मिला. There was people just continued to link with the idea of bhakti, और इस तरह से different religions just got its base. The teaching of the Holy Quran was brought to India in the 7th century by migrants. और कुरान के बारे में भी इंडिया में कब पता चला? कब? वहाँ से लोग, जहाँ पे कुरान का था, वहाँ से लोग migrants came to India. They just came with that teachings. They brought it to India. और कब लाए थे? In the 7th century. Quran is the most prominent holy book of the Muslims, and which delineates the idea of one God, Allah, and His love, bounty and mercy for those who believe in Him. So Islam and ulama, the learned theologians and jurists, were patronized by many rulers. So इस तरह से we can see the increase, the popularity of Islam thing also came to be the part of this subcontinent. So, इसी तरह से हमने आज यहाँ पे जाना इस चैप्टर में कि हाउ डिफरेंट थिंग्स डेवलप इन दैट 1000 ईयर, यानी कि मिडिवल पीरियड. आई होप आपको समझ आया, अच्छा लगा होगा, याद रहेगा. इसी के साथ ही इस वीडियो से मैं लेती हूँ आपको एक गुड बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, द टर्म्स एंड द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. सो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर स्विच करके देखिएगा. और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट.